द थिंग इज कि इंडिया का टैग अगर ना रहा आपके गेम में, तो ऐसे में क्या इंडियन ऑडियंस उसको खरीदेगी जस्ट बिकॉज फॉर योर गेम मैकेनिज्म? Even like 12 to 16 months before launch, you need to be totally active with your marketing game. Otherwise, you can have an amazing game, but it can still flop if you don't do ओके the right marketing. सर, आप एक सच सच Exactly. बताइए, आप मतलब दिल पे हाथ रख के, आप नहीं चाहते हो कि प्लेयर बार बार मरे? Because at every point we would make something and we'd be like, wow, this is so good. But then when we दुनिया को जब दिखाते हैं तो असलियत पता चलता है. So the biggest tool we have to use as game developers is we have to keep getting our game tested. गेम ओवर जो होता है ये पहले के दौर पे बहुत हुआ करता था, अभी के टाइप पे यू डाइड लिखा हुआ होता है। Yeah. तो यू डाइड क्या गेम ओवर से अच्छा काम करता है? So if we can make in India but sell globally, we have that advantage. After 11th and 12th, it was clear to me कि I wouldn't like normal education. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू येट अनदर फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ गेम टाउट गॉसिप। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसा डेवलपर जो कि ब्रूड गेम्स का फाउंडर भी है और साथ ही साथ उनका एक नया गेम भी आने वाला है, तो उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उनका नाम है प्रशांत। प्रशांत जी, आपको गेम टाउट गॉसिप पे आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you so much, Siddharth, for inviting me. ग्रेट मैन। तो आज हम लोग आपको जानेंगे थोड़ा सा, इफ आई कुड टेक यू बैक लाइक दोज ओल्ड डेज, जब आपने पहली बार गेमिंग की शुरुआत की, वो कौन सा दौर था? आपने किस टाइप का गेम खेली और कौन से प्लेटफॉर्म, लाइक कौन से कंसोल वगैरह, कौन सा हार्डवेयर आपके पास था? Sure. तो I think starting में obviously probably late 90s में था, जब I think just बच्चे होने का वो मेमोरी तभी स्टार्ट हुआ था. तो आई वाज Yeah. लकी इनफ टू हैव अ डैड हु वाज very excited about getting me a lot of the cool things that he probably couldn't afford, but he wanted me to like try Obviously. out some of the things. He wanted to encourage me. So I think earliest memories are probably definitely Mario. I think Okay. it started off with those consoles. I think they were like unbranded, like knockoffs that you could get, जो ऐसे हर सिटी में वो रहता है ना, एक जगह जहां आपको सब जो गेमिंग रिलेटेड चाहिए तो वो मिल जाता है. या तो ऐसे या जगहों गेम पार्लर, में गेम मार्केट वगैरह, या एग्जैक्टली तब तो कुछ कंसोल्स तो वर नॉट बीइंग नो सोल्ड नो ऑफिशियली इन इंडिया नो। एनीवे. तो कैन यू जस्ट तब वो मेंशन द हुआ. ईयर सो दैट माय व्यूअर्स कुड रिलेट? Okay, probably I'm too old, but I think it was नो नो, probably इट्स in ओके, फाइन। 95, 96, or maybe even 97. I don't ओके exactly ओके remember. ओके तो तब था. और वो 4-in-1 कैसेट. I had like 164-in-1 cassette as well. तो ओके ऐसा it was just a small chip, and then it would have the black plastic covering, and उस पे एक पोस्टर रहता था कि ओके सारे गेम्स जो है. So ओके। initially it was like Contra, Contra, Mario, Mario, yeah. Bomberman, Yeah, वो and सारे. if I talk about those like 97 to 2000 years, and that is the like transition phase for the not only in gaming but also in technology. So you probably have been through all the transition all through, and you played, like you started games like Mario and Contra in those cassettes, Yeah. and after that you switched to which console? Like any other So console you played? After that? directly after those consoles, I think for a few years, I think I didn't really get back into gaming. I think I was more on the like dad didn't get me, so I obviously Okay. couldn't like figure out. Okay. But then again, it started, and he showed me Dave, so on PC. So Okay. from that time, I think for the longest time, I've been a PC gamer. तो वो हुआ Aladdin. Then so Prince of Persia, तो वो भी Okay. था. So Lion King game था. Lion King, And yeah. of course बाद में all the bigger games started, like like Half-Life. उससे पहले Doom और वो सब खेलने को मिला. Then I think I played a lot of other types of games. So really, it's tough to keep track. But basically, it was the time when we had the floppy disk. I guess a lot of the Yeah. audience today You still would remember know. those floppy disk? Yeah. It was And it really would costly back then, even with Yeah. not much storage, but like MBs. The Yeah. MBs was there. Yeah, it And was one more thing. 3.15 MB.
Exactly, man. One more thing that I would like to, tell every viewers that I've been, interviewing many people, but when it comes to developers, they all like had like very good supportive parents, Yeah, and you are one of them as well. So yeah, yeah. probably I didn't have any supportive parents back then, because my first thing was like PS2 was my first console, and before Okay, that I was used to go to game parlor and everything, and I was used to play the right. Contra as well. So talking about your first games like Mario and those, even the Prince of Persia was earlier version, that those are kind of platformer game, Yeah, and yet yes, after transition yourself to a developer right now, a full-fledged developer, I yeah. would say. So you are going to bring a certain game that is, we would like to talk about in certain, in a few moments, that the Winds of Arcana, the Ruination one, which is it's still available on Steam, but it is about to be announced. आपने जो ये पर्टिकुलर गेम जो अभी बनाया है, तो ये क्या उसी से आपको इंस्पिरेशन मिली है, ये जो मारियो वगैरह आप खेलते हुए आए थे? So definitely many of those games did, initially influence like me and my co-founders, पूरे team को काफी Okay. सारा, वो experiences थे. But actually that was not the only reason. We also played a lot of other like games. We played World of Warcraft, we played Dota, we played like Counter-Strike, we played a lot of the role-playing games. We played Divinity, Baldur's Gate, Okay. Warcraft, StarCraft, so many different types of games. I think the most important point for us was keep trying different types of games like Roller Coaster Tycoon, Zoo Tycoon, Railroad Tycoon. All of these types of games, really, this is my most like favorite, cherished memories in summer holidays. क्योंकि I was मैं उतना social नहीं था Yeah. and I'm a single child. Okay. So the best and my dad is a doctor, so he would always be busy in the Yeah, hospital I understand. Yeah. 24/7, all of that. Long So hours. more, yeah, exactly. So most of I think my childhood, especially summer holidays, I would love them because all I would need is to just be in front of the computer and uh, उन दिनों में तो like floppy disk your friend or like you would get the floppy disk, but there was no guarantee that it would work. थोड़ा सा Okay. भी corrupt हो गया तो that's it. तो You गया can बस never ever खत्म. play it again. And खत्म. like if someone literally gave it to you, it was like it was like your treasure. कि इसको इंस्टॉल करना वो गेम खेलना एंड वॉट एवर गेम्स आर अवेलेबल सिर्फ वो हम खेल सकते थे so still, that's part of the childhood memories. You asked me the Yeah. question, so I started So thinking about it. of course, of Um, course, I told you that I will revive some of your good old memories, and I'm doing it right now. definitely, So I want to definitely, ask you something critical thing. Being a developer, okay, being a yeah. developer, you face lots of gameplays. You do lots of gameplays, and in between that, do you really think that as a developer we need to hop on like every genre of gaming, so that to understand what is the core mechanism we are about to set in our upcoming new games? Is it really needed to play all those kind of genres? So I don't think that you do need to play all those types of genres. Like for example, I don't play shooters anymore. Like I don't play competitive games. Okay. I'm not very good at them, and I'm not Okay. very interested in them. But I know a Okay. lot of people, many of my friends, they do play a lot of those games, and they Yes. also enjoy it for the social aspect. Okay, would you So like to I can mention like some games? Would you like to mention some games for the viewers? the ones that I play or the ones I don't play. Now, the one you don't you don't really love to play, but your friends plays. Okay. I guess like some of the shooter games, I think like CS:GO, even CS, Counter Strike वगैरह, oh definitely वो Valorant, Destiny 2, yeah. PUBG, yeah, all of those games like they're very popular in the world, so that Okay. I totally understand. But for me, I think I'm a different type of gamer, and luckily, there are so many different genres. The Okay. great part about it is every genre has something new, and it kind of makes you think of different things. Okay. And like sometimes a very good fun thing for me to do is play like a cooking game, like Okay. Overcooked. Like I just love those types of games. Sometimes, I like turn-based RPG games.
Sometimes I just like a casual, chill game as well. So I think people should explore, people should try. I would definitely recommend like बहुत surprise कर सकते game genre. So like Steam is such a great place to like find completely new types of games, and it can be a lot of fun. So I think ऑफ it's कोर्स। always good to know what else is out. ऑफ कोर्स सर, ये बताइए प्रशांत जी कि आपका ये जो जर्नी था, ये जो शुरू हुआ फ्रॉम योर कॉलेज पार्ट, आपका क्या था, आप कौन से ऊपर डिग्री किया, ऊपर से अपने ऐसा ऐसा कभी माइंड पे था कि क्योंकि आप गेमर तो तभी से थे, तो ऐसा कभी माइंड पे था कि कॉलेज को लाइक मतलब बैकआउट करूँ, कॉलेज को छोड़ दूँ बीच पे, क्योंकि होता है ना कि लोग प्राउडली कहते हैं कि यस आई एम अ ड्रॉप आउट। सो डिड यू हैव एनी इंटेंशन दैट आई हैव टू ड्रॉप आउट द कॉलेज एंड देन आई हैव टू मूव टू द परसू माई गोल्स एंड एवरीथिंग? So I think after 11th and 12th, it was clear to me that I wouldn't like normal education. So I was No, like, no, no. I'm not fit to like enjoy, or I mean, I'm not Okay. fit to take up any of these courses. Everything Okay. seems like boring and all of that. And I really didn't know what I was going to do. And then मेरे एक दोस्त ने बताया कि he wants to enter the games industry, he wants to like become like a technical artist, he wants to learn like Unreal Engine. So I was like, okay, wow, this is pretty cool. मैंने like Yeah. कभी सोचा भी नहीं था कि you can be in the games industry in India. Yeah. You just Yeah. like play the games, enjoy them, and then बस like खत्म करो, हाँ वही। exactly. So that happened, and then I did a professional diploma in game art. ओके। Because at that point it was like either become a programmer or a 3D artist, and this is back in 2008 that I'm saying. ओके। And tab, you had these companies that would do outsourcing for games abroad. ओके। So I was a really, really bad 3D artist, and I spent many years trying to be a ओके। good 3D artist, So you but improved really, right now. really. You are improved version right now in 3D. Left, Sorry, your 3D art. yeah. Please say once because your voice was not Yeah. coming. Please, yeah. So for many years, I tried to be a 3D artist, but Okay. then I was not at all meant to be a 3D artist. Okay. What I did enjoy was project management, Okay. production, talking to people, planning things out, being involved in everything. Uh, so that I think became like my the thing that made me get most involved with the project Yeah, was you to know just everything about it. getting to know the ecosystem of how the developers community work and how a game from a idea perspective ये कैसे grow करता है, conceptual Yeah. कैसे करता है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, like we are like gamers, so we buy games and if you don't like we put some negative reviews when we are done with that particular game, but from every game उसके पीछे भी ना बहुत स्टोरी होता है। तो मैं कुछ स्टोरी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो ये ब्रूड गेम जब शुरू किया, इससे पहले की कहानी क्या है, लाइक आप क्या कोई कंपनी के लिए काम किया करते थे या तो फिर क्या सिनारियो था? श्योर। तो एक्चुअली जो प्रोफेशनल डिप्लोमा मैंने किया था उसके बाद एक कंपनी में ज्वाइन किया विद द होप्स दैट वी विल गेट टू वर्क ऑन अ गेम, बट वहाँ गेम इंजन यूज हो रहा था बट गेम्स के लिए नहीं। दैट वाज अ कंपनी दैट वाज बिल्डिंग आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट्स। ओके। तो 3D में काम हुआ, 3D मैक्स में काम हुआ, गेम इंजन में काम हुआ, फोटोशॉप सब यूज हुआ, सेम स्किल सेट्स बट पैरेलल इंडस्ट्री लाइक नॉट या, गेमिंग। तो वो आई हुआ, अंडरस्टैंड। फिर आई जॉइंड द सेकेंड कंपनी, वहाँ AR VR पे काम हुआ, फिर से अनरियल सीखा, 3D मॉडलिंग के बारे में और बहुत सीखा, बट स्टिल गेम डेवलपमेंट वाज एस्केपिंग मी, लाइक आई कुड नॉट गेट इनटू गेम डेवलपमेंट। एंड देन फाइनली एक और कंपनी ज्वाइन किया, वहां भी AR VR प्रोजेक्ट, इतने सारे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिजनेसेस के को पिच किया, डिफेंस इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, सब में ट्राई किया, बट आई थिंक इन इंडिया इट्स वेरी टफ, एंड AR VR एज टेक्नोलॉजीज आर वेरी वेरी टफ, स्पेशली इफ यू वांट टू फाइंड अ बिजनेस केस। तो वो सब हाँ। ट्राई किया, फिर फाइनली बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे हम सब को फाउंडर जो है। तो हाँ। हाँ। वन डे वी जस्ट डिसाइडेड कि हमें कोई जॉब नहीं मिलेगा गेम इंडस्ट्री में, क्योंकि हमने कभी गेम शिप ही नहीं किया। हम्म। So our developer Yashasvi, one day he was just like, I won't get jobs here, I won't get jobs abroad, so ओके। I have to ship something. So I'm going to do it. ओके। I'm going to do it anyway.
If you Okay. guys are interested, you can join. We'll figure Okay. something out. Otherwise, also, I'm going to do it because I don't want to be doing anything else with my life. तो Okay. immediately हम दो और लोग थे, हाँ me हाँ. and the technical artist, and we were just like that is convincing, या and मतलब that ये was ये how. ये जज्बा होना चाहिए यार, लाइफ के कोई भी फील्ड पे आप हो, मतलब इट इज़ रियली Yeah. नीडेड, वो जिल अंदर से आनी चाहिए कि लाइक मैं कर दिखाऊंगा. Bilkul. And I think he definitely had that, great confidence in himself. And he's a programmer. So, him being quite confident, we were like, hey, if he's so sure, then definitely we're going to build it. We didn't set any other expectations. We were just like, let's make a really good game. ओके. Nothing else matters. Just make a really good game and then we'll feel. Because in our whole career of like 13, 14 years, we didn't even have one product or moment that we could say, hey, that's something we made. या. Everything would always like start and then it would finish, like not even finish, like 50% it would stop. And we'd never get that satisfaction key. Yeah, we worked on something meaningful, something really good. So that's how the journey started in December 2020. And ओके. सोचा था कि we'll just create a really good game and then we'll be sorted. We won't need jobs and all of that. It's taken a lot longer या. than we सो thought, प्रशांत, but आई कैन रियली से दैट द लॉकडाउन पीरियड जहाँ पे आप सभी, हम सभी ऑफ कोर्स घर पे बैठे हुए थे, तो सोचने का थोड़ा वक्त मिला, और ये चीज़ मतलब थोड़ा सा मतलब आपके लिए काम किया कि बैठ बैठ के सोचते हैं, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ये सेशन आपको मिला. नॉर्मली लोग जॉब के लिए लगे पड़े होते हैं, बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, तो इस दौर के वजह से कि आपको थोड़ी सी मतलब वो मिली, जिल मिला एक्स्ट्रा करने को. आई थिंक वो लॉकडाउन के पीरियड में एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गया था बिकॉज वी वर अच्छा. वर्किंग सुपर हार्ड फॉर आवर कंपनीज बट देयर वाज ओके. नो clarity in sight, there was no plan in sight, it was completely uncoordinated. And for me and my co-founders, we always somehow hadn't found a way to get into a bigger studio, even if they were doing mobile games or something like ओके. that, which did exist back then, but we never could crack it. We didn't know F2P. We didn't play F2P games and we didn't work on F2P games. So for us, games meant you pay, you purchase the game, वो लाइब्रेरी में रहेगा या फिर डिस्क रहेगा एंड लाइफ लॉन्ग जब भी चाहो खेल सकते हो. लाइक दैट इज व्हाट वी कंसिडर्ड एज games that we want to play. तो वी राइट. वर लाइक विल मेक गेम्स एग्जैक्टली लाइक दैट. तो हमने सोचा कि एक अमेजिंग वाला बड़ा सा 3D गेम बनाएंगे हाँ हाँ. फ्यूचर में. बट फ्यूचर उसके में लिए काफी सारे सीढ़ियाँ पे चलना यू हैव टू चलना गो थ्रू, या सीखना यू हैव टू गो पड़ेगा. थ्रू अ लॉट, या. हाँ, तो there was a lot of learning we needed to do. We had never shipped a game. We're like just four people when we started. And yeah, we're still on that way. We still haven't released the game, but it's coming out quite nicely. प्रशांत जी, मेरे दिमाग पे ना क्रिटिकल क्वेश्चन ये आ रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल भी है, शायद आपको लगे कि आपको क्या लगता है कि इंडियन जो डेवलपर्स है, अगर बाहर के कोई कंपनी उसको हायर कर रहा है, इफ अमेरिकन कंपनीज, गुड ओल्ड फ्रेंच कंपनीज आर हायरिंग इंडियन डेवलपर्स फॉर मेकिंग देयर गेम्स, तो आर द इंडियन गेम डेवलपर्स आर लाइक अफोर्डेबल कैंडिडेट फॉर देम टू हायर? बिकॉज द जितना मेरे को पता है, अमेरिका का कोई बंदा ज़्यादा पैसा लेता है और इंडियन गेम जो डेवलपर होता है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, मतलब मैंने सुना है. आई डोंट हैव एनी उसके ऊपर कोई मेरा रिसर्च नहीं है, पर आपको क्या लगता है इस बारे में वैसे? I think many of the people, like many of my friends, have gone abroad. So ओके. one common trait that I can see कि उन सब में जो है वो हार्ड वर्क का वो क्वालिटी रहता है, वो हाँ हाँ. हंगर रहता है, that they have that passion कि we want to be really good. हाँ So हाँ. whatever years they spend in India, they really work on some really good projects, whatever is हाँ हाँ. available. And opportunities थोड़ी कम ही है, थोड़े हाँ. कम ही है इंडिया में. बट दे ट्राई एंड देन दे somehow they find a way to go abroad, and once they get there they try their best, and like they can really be open to a lot of opportunities. So I यस सर. think in that way good attitude रहता है, good hard working ये, and most people in India are social as well.
So they Uh-huh. get along with anyone everywhere, and there are Indians all over the world. So Indians get comfortable wherever we go. Okay. So I think that's definitely always, especially on a technical front, I can say like programming, graphics programming, 2D art, 3D art. I think even now animators have like started Mm-hmm. those. I think those things where it's very clear what you have to do and how to do it, even if it's challenging. I Absolutely. think people can crack it. Things like game design, narrative design, all that is still, it's very early. I don't think we've seen, even though we make really good movies, we Okay. write really good stories here. I think still waiting for a game that can push the boundaries of what narrative storytelling in games is, Okay. largely made by an Indian team. And I think that is still yet to be seen, but it can happen. Yeah, I would like to ask you something regarding the game design and the game art part, obviously. And I have seen your video also on that one. So, but before that, on this particular context, because it is the ultimate time for me to ask, I can give you two situation. Okay, you have to choose any one of them. Okay, so इसका ये है कि यूएस में कोई कंपनी आर विलिंग टू पे यू सम अमाउंट ऑफ मनी जहाँ से आपका अच्छा खासा ज़िंदगी गुजर जाएगा। आप क्या वो करोगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म, अब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्वायरमेंट आपको ऐसी दी जा रही है कि पैसे वैसे सब मिलेंगे, लेकिन गेम जो आप डिज़ाइन कर रहे हो आपको खुद भी पता है यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, लाइक इट्स अ फुल ऑफ, मतलब मेरा बस का बात नहीं है, वो बेकार का चीज़ है। तो वो आप ये करोगे, उनकी इशारों पे करोगे, या तो फिर आप थोड़ा सा ग्राइंड करना चाहोगे यहाँ इंडिया पे रह के, थोड़ा सा ठीक है पैसा वैसा मेरे दोस्त ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है गाड़ी वाड़ी ले रहा है, मैं मतलब जो कर रहा हूँ मेरे को मतलब मेरा दिमाग को ठीक रहना चाहिए, मतलब ये कैसा सिचुएशन को आप किस तरीके से लाइक एक्सेस करना चाहोगे? ऑलरेडी मैंने तो वो डिसीजन ले भी लिया है, आपने बिकॉज लिया है, इसीलिए मैंने कहा कि वो इसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस था? मेनली हमारे लिए तो द रीजन वाज दैट वी कुडंट इवन गेट अ जॉब एनीवेयर, लाइक वी ओके। अप्लाइड इन सो मेनी प्लेसेस, बट आई ओके। थिंक बिकॉज वी वर अ लिटिल, we had a lot of professional experience but not enough relevant industry experience. So ओके। any company would try to hire us, they would have to train us, or at least they would have to take a risk on us, हाँ। because we would not be familiar with a lot of those things. हाँ। So हमारे लिए it was like there was no choice at all. हाँ। Maybe for हाँ। other people, many of our friends, they had relevant industry experience and they went abroad to continue that. So unke liye, I think this question would be really good. We have some friends who are abroad doing really well, but they keep thinking कि okay, 3 years में वापस आके क्या करना है? Like how अपना is भी the कुछ industry करना है। going to be? हाँ। Definitely. They will keep thinking, but also the reality is that the games market is right now super super competitive. ऑफ Like कोर्स। that is also quite a crazy thing. You have to be very confident, very very confident. Many people can put together a concept of a game. Many few people can put together a really good demo, and in that also very few people can actually ship a game. That's forget like a good quality game. Even shipping a game is so difficult because it takes you years to build something that's really good. You need a team. There are a lot of dependencies, so much responsibility. The commitment is actually crazy. We never ever thought that we would need to put so much hard work into it, and maybe that's why by the end of it, they call games like a labor of love. You have to ओके। keep working on it every day, day in, day out. When you're motivated, when you're not motivated, when you're busy, when life is happening, also you need to keep building the game. So I think यस। it's quite a journey. You started this journey back in 2020. So it's been, Yeah, I can say, like 3 years, 3.5 years almost. yeah, yeah. So how is it going? And my second question will be like, did you guys are you guys bootstrapped, or like are you guys taking any funding from anyone? Yeah, so it was very clear to us when we started the studio is one is we can do services, Okay. make games for other people, and then generate revenue, and then Okay. slowly shift to making your own game, Exactly. or like directly start building your game, and then Okay. try to build it really fast, release Okay. it, and then learn from it, and then hopefully you can monetize, and then you can get enough money.
So clearly, both those didn't work out for us Okay. because we've The seen a service lot of part didn't work. studios. The service part, you have done it, No, right? The service part, we never tried it. We you never never tried tried it. it because we said let's build the game itself. Let's Okay. ship the game because we'll do services. It'll give you money for 6 months, Okay. and then you're trying to build the game. Then again you'll run out of money. Again you'll do services. So I think your vision for the game and your motivation slowly keeps dropping out. So many studios we see, right? Even in India, because it's actually a challenge. Nobody is willing to invest into it the money that is needed for you to build a big game. You have to do Exactly. it yourself. And Exactly. as you try to do that, I think it'll take you 7, 8 years. By that time, the generations have changed, the technology has changed, your initial assumptions about making a कंज्यूमर game. बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे. Exactly. ट्रेंड्स तो बहुत चेंज हो गए होंगे तब तक. So धीरे it's धीरे. like that's what we thought. Let's just build the game, release it, learn from it, and then just keep like trying to figure out. We thought we are in India, our costs can be low because we don't have to pay lakhs and lakhs for an office. Yes. We don't have to expect like corporate type Yeah, expenses lifestyle. will be in nominal side. Yeah. I And understand. the audience is global. So if we can make in India but sell globally, we have that advantage. We don't need Okay. to be that successful. अभी Okay. कुछ AAA game release होगा, the budget is so high that even if you do 1 million copies, it's not enough. You need to Okay. do like 10 million copies, 20 million copies. That is crazy. Whereas being a small indie studio, maybe selling 100,000 copies would be an amazing like dream come true. Like, you'd be sorted for 6, 7 years in terms of financial security. So that's how we were thinking is build the game. But of course, we were only four of us. We built first 1.5 years we were bootstrapped. Then Okay. 2022 May we were really fortunate to receive a pre-seed investment from Okay. a VC fund called Ventana Ventures from Udupi. So Okay. they were crazy enough to support us. That helped us take up an actual office space. तब तक हम एक one bedroom house, we'd taken it on rent and Oh, we I were just understand. We working out understand of with the there. same struggle every entrepreneur been through. Yeah, Right. exactly. So how's it So we feel? did. How's it feel like right now? Because you are about to release a particular game called Winds of Arcana, the Ruination. Yeah, yeah. Tell me something about that particular game. That how you idealize that particular game and like what is the roadmap up to the Sure. release? Sure. So we knew eventually we want to build a big open world type of game where Yeah. there are a lot of characters, big enemies, boss fights, quests, all of that. But like I said before, we would need a big team, 30, 40 dedicated people who experience working together and releasing titles. So we had to start a little bit smaller, but we didn't want to go 2D because Okay. we came from a 3D background, and eventually Okay. our goal was a 3D game. So it doesn't make sense to make a pixel art or a 2D game and then try to make 3D. So we Okay. decided we'll do a 2.5D. 5D. Yeah. That's how it started. So everything, all the Okay. assets, all of it is 3D, but the camera is always on a side scroller point of view. And as a platformer, it works and it keeps like moving. So pehle Great. हमने so at that point we played like games like Hollow Knight and Ori, Okay. and we loved them. They were absolutely amazing. Have you We played that realized particular? Have you played the? Sorry for cut you out. Have you no, played no. that particular game like Little Nightmares? It is also a Yeah, 2.5D if I'm not yeah, wrong. yeah, yeah, That is a yeah, yeah. One of great our series. That is a co-found great series. Yeah, Yeah, yeah. one Please. of our co-founders has played it. I Okay. haven't, but I've seen it. And there's also, Okay. I think, quite a few games like that. The 2.5D games, they're really good as well. They're tricky in their own way, and they also have a very high benchmark. So Hollow Knight was the game that made us really want to make a Metroidvania. And the thing was, Hollow Knight was made by three people. So we have Okay. like huge respect for that studio, how And the big that game. inspiration. Absolutely. Them, there's Yeah. another studio called Supergiant Games. They made Bastion and then Hollow Knight recently is Hades. like 2017 game if I'm not wrong. Yeah, Yeah, yeah. And it's 2017 still game. so good today. Like it's just that good a game. Like once in a while I even play it myself.
I'm not And fortunate enough to yeah. played it yet, but Okay. actually I was waiting for the Steam sales, but Okay. the game price is still that high, so I didn't wait for it. Okay. You should So I, definitely wishlist it. You'll get it on a yeah, good price. I would like to. I would like to, but because in my channel I Yeah. also Yeah. review the particular games on the basis of Okay. certain parameters. So वो तो Okay. मैं करूँगा ही. मेरा अगला सवाल Awesome. आपसे ये होगा कि आप 2.5D का इस्तेमाल किए हो, तो इस पे क्या आपको लगता है कि 2 पॉइंट इफ़ यू वर्किंग विद 2.5D काइंड ऑफ गेम जॉनरा, एंड इस पे क्या कोई कॉस्ट कटिंग हो जाती है? अगर आप 3D बनाओगे तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है 2.5D करने से? आई वुडेंट से दैट नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो कॉस्ट कटिंग का एंगल नहीं रहता बिकॉज अल्टीमेटली इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ अ गेम यू आर ट्राइंग टू बिल्ड सी दैट्स व्हाई हमें ना ये मेट्रोइडवेनिया का वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा बिकॉज द नंबर ऑफ levels that you need are still a little bit lesser because Metroidvania में ऐसा गेम डिजाइन है कि you have to come back, you have to revisit, you have to explore. Metroidvania या genre is all about finding secrets, learning about a world, and you're experiencing that journey as you are going through it. Whereas it's not like a story. Like let's take an example of like Uncharted. ओके. It's a very linear, high budget game, right? या Every area you have to work on, you need like a team of like 300 artists ओके. building these ऑफ कोर्स. magnificent like set ऑफ pieces. वो कोर्स. सब या whereas smaller games like let's say Supergiant का जो Hades है, the हाँ. number of final assets that you need are slightly lesser. Of course, there your creativity is challenged by narration, the narrative, the music, the world. There are other ways to give. Basically, when you're a small team, you have to give the illusion of depth. ऐसा लगना चाहिए कि गेम हर एंगल से वाव इतना डेप्थ है बट एक्चुअली उतना है नहीं but it's enough, it's engaging, fun, all of that, that you can spend hours and hours. So that ओके. was our main thing. That's why, like, we're trying to build a game that's like 10 to 12 hours of gameplay experience. ओके. And we wanted replayability. So इसीलिए हम ऐसा Metroidvania का डिजाइन सेलेक्ट किया है. अभी के टाइम में कितने कितने सारे लोग काम कर रहे हैं आपके मतलब कंपनी पे? So हम 4 लोग हैं ओके. co-founders ओके. and 5 लोग हैं team members. So we Okay. have a Kind of concept 9 or 10 artist. people. Yeah, 9 of us right now. Yeah, I would like to meet the team as well, but on a certain another podcast. But I would like to ask something that you mentioned कि ये जो बड़े बड़े गेम होते हैं लाइक अनचार्टेड वगैरह, तो यहाँ पे ना एक अलग अलग टीम काम करती है. इवन मैं मिराज के टाइम में यूबीसॉफ्ट का भी देखा हूँ कि अलग अलग यूबीसॉफ्ट के जो सब्सिडियरीज है वो अलग अलग, यूबीसॉफ्ट इंडिया पे ही काम किया था लाइक स्कल एंड बोन्स जैसे गेम में. तो ऐसे में देखो गेम फिर भी बनने में इतना देर लगता है, तो आप 4 5 6 जन मिलकर अगर कोई गेम को बनाओगे, ऊपर से ये आपने कहा कि यू नीड टू टच दैट लेवल, एटलीस्ट वो एसेंस आए कि उस लेवल का है चीज़, तो ऐसे में टाइम तो लगता ही होगा प्रोडक्शन में, मतलब बहुत टाइम लगता होगा फिर. बिल्कुल बिल्कुल. I think we've spent almost 3.5 years getting here, and we are about to launch the demo in a month. Okay. And there's still so much work that we have to put into that. Actually, हमारे Okay. game का this is almost the 5th iteration because at every point we would make something and we'd be like, wow, this is so good. But then when we दुनिया को जब दिखाते हैं तो असलियत पता चलता है. Because for us, Okay. we want the game to be as good as it can. We don't want any other reason to be like, हाँ आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो इसीलिए ये क्वालिटी रहेगा. Like we don't want any of that. We want to give it our best shot कि this has to be as good because हम सब लोग in India we play all sorts of games, right? Yeah. When it releases 12 a.m. हम लोग भी खेल रहे हैं, तो why is it that we can't try to make games of that quality? Of course, we're far away from doing that, but I think more teams should try. More teams should take that risk and slowly bring in that culture ki we can make serious games here. We can make really good games here. तो you are trying to bring a particular demo before the release. Yeah. So ये टैक्टिक्स क्यों? क्योंकि मैंने एक डेवलपर से भी बात किया था, शायद आप उनको जानते होंगे, फ्रॉम अंडरडॉग गेम्स, राइट? तो वैभव जी से मैंने जब बात की था तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कोई डेमो रिलीज करने नहीं वाले, होपफुली वो करेंगे, आई डोंट नो, पर आप लोग कर रहे हो,
तो यहाँ पे क्या लाइक टैक्टिक्स है आप लोगों की, क्योंकि इंडिया मार्केट की अगर हम लोग बात करें, इंडिया पे अभी के दौर पे लोग बहुत सारे गेम खरीदते हैं, अभी के दौर पे सबका पास स्टीम अकाउंट है। पहले के दौर पे लोग पायरेसी ज़्यादा करते थे, लोग बाहर के गेम्स उतना नहीं खेलते थे, लाइक घर के ही कुछ गेम हुआ करता था, वही रमी टमी वही सब खेलने में व्यस्त थे। तो अभी थोड़ा सा ना ये एक्सप्लोर कर रहा है इंडियन सिटीजन, इंडियन ऑडियंस। तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? लाइक आपको अगर क्या लगता है ये डेमो को अगर आप रिलीज़ कर पाओगे और इससे क्या आपकी मार्केटिंग और भी सॉलिड बन सकता है? So definitely पहले there was this culture कि demos खेल के ऐसा एक अच्छा idea मिलता था. Then it kind of stopped. But now demos are actually making a comeback. If you see many of the other bigger games, the good thing about demos, see unless you're a really big studio, like Assassin's Creed का demo जरूरी नहीं है because ना audience ना, already knows about it. And तो the आईपी है उसका। developers already have that caliber, that skill set. They know what is better than before. But for a smaller studio, when you put the demo, you understand all the small aspects about it. ऐसा नहीं कि you spend 4 years, you release the game, but then it's too late to go make changes. So the biggest tool we have to use as game developers is we have to keep getting our game tested. जो मुझे फन लगता है ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको लगे. तो आई माइट बी टोटली ब्लाइंड, आई माइट जस्ट बी बायस्ड, ये मेरा गेम है तो मुझे अच्छा लग सकता है, बट द रियलिटी इज गेटिंग पीपल टू प्ले इट. या दैट इज द सिंपल, लाइक इट्स अ वेरी टाइम, like if you know for sure you have something good, putting half an hour of game, it will in fact convince people more, because even for me, right, until I ओके। am convinced a game is worth, like unless मेरा कुछ अच्छा गेमर दोस्त बता ना दे कि ये गेम खरीदो, I would do so much research. वही डेमो रहता, immediately try करता, I would know. So what happens is the chances of me refunding the game are very low, because ओके। वो हाफ एन आवर में मुझे पता चल गया what is the game about, what is the quality, will I enjoy this. So it can save a lot of yeah. And the other thing is it also shows the developer quite a lot of confidence. They'll start giving feedback. See, if we can build a community of 1,000 hardcore people who are interested in this game, they can give us feedback that can help us scale to 50,000 later. I think it's very important nowadays to have a community. Otherwise, I think it's very tough, because last year, I think there were 14,000 games that released. How is your game going to stand out in ऑफ 14,000 कोर्स games? डेली 50 गेम रिलीज होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू गेम इट इज़ काइंड ऑफ अ फिजिकल प्रोडक्ट, राइट? अब बहुत सारे अभी लाइव सर्विस भी आ रहे हैं, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। लाइक फिजिकल प्रोडक्ट जब होता है ना, सो देयर इज़ अ टेंजिबल फैक्टर, तो वो तो होता है। एक तो फिजिकल प्रोडक्ट का होता है टच एंड फील। अभी मैं उसी को अगर डिजिटली वर्जन का कहूँ तो थोड़ा सा डेमो मिल जाएगा ना, तो बंदे को लगेगा कि नहीं ये अच्छा था। जैसे कि इफ़ यू टेक लाइक माई एग्जाम्पल, देन आई हैव प्लेड द गेम कॉल्ड Prince of Persia: The Lost Crown, which is a pretty good game. Amazing. I couldn't buy the whole version because I'm not getting enough money for that. वो 2000-2500 का गेम है, वो जब तक कि नहीं 1000 पे आए तब तक मेरा रेडर पे नहीं आएगा, राइट? तो वो चीज़ है। अभी आई वुड लाइक टू परचेज द गेम, वो मेरा विश लिस्ट पे ज़रूर है। एंड आपका गेम अगर किसी का विश लिस्ट में आ जाए, वो भले ही मार्केटिंग के वजह से आ जाए, भले ही डेमो के वजह से आ जाए, सो दैट इज़ द वेरी गुड थिंग। और इससे अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि आप ये गेम को आपने कहा कि यू विल प्रोड्यूस अ ग्लोबल मार्केट फॉर द पर्टिकुलर गेम, एंड दैट इज़ क्वाइट जस्टिफाइड बिकॉज ऑब्वियसली इज अ गेम एंड ऑफकोर्स द लैंग्वेज इज इन इंग्लिश, इफ आई बिलीव। तो मतलब अभी बाहर के जितने भी सारे लोग हैं, ये आपके गेम को खेलेंगे, ऐसे में आपका और भी बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो लाइक इस चीज़ को आप लाइक कैसे देख रहे हो? No, definitely. I think the market is abroad, because the people who play and enjoy these types of games are abroad, and they also have the money to be able to spend, and they do enjoy these kinds of skill-based, challenging games. तो यूएस में है, यूरोप, एशिया में जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, all these countries, like people really love these types of games, and I wish there was more of an audience in India. That would be really good, but we have to go as as per the market forces. And in today's age, development is 40%, marketing Yeah. is 60%.
So you really like even like 12 to 16 months before launch, you need to be totally active with your marketing game. Otherwise, you can Mm-hmm. have an amazing game, but it can still flop if you don't do the Okay. right marketing. So, marketing is very key, and you need to get every little advantage. It is like doing 1,000 things right to finally have that thing in place. And having the demo out there is one of the very, very crucial aspects. तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपका जो डेम है, लेट मी गिव टू डीप डाउन इनसाइड द गेम एंड आई एम नॉट गेट एनीथिंग स्पॉइलर, ठीक है? तो व्हाट डू यू हैव एनी डिफिकल्टी लेवल इन दैट पर्टिकुलर गेम? So, no, we don't have any difficulty setting because ओके, in our game is also inspired by Souls-like games, ओके, which also are difficult games, but they don't have a difficulty setting. ओके, So the whole challenge is that आप Mount Everest को climb करोगे तो आपको like no matter who, if you meet another person who's climbed it, both of you know how difficult it was. ऐसा नहीं है कि हाँ, you changed one setting, it became easy and you finished it anyway. It's like that. That is how Souls-like games are. In our game, however, of course, we're not going to make it as tough as Souls-like games. But still, you have to learn how the combat system works, how the platforming works. You have to notice the enemies' attack patterns. All of that is very integral. It is if you as a player understand all of that, the game will seem easy. But if you don't understand it, it can seem really tough. So that's how most of these Metroidvania games are. That they will be quite a bit challenging. So no, we don't have any difficulty settings. We may have one or two settings that may make it little bit easy for some particular aspects. ओके, टॉकिंग अबाउट डिफिकल्टी एंड सोल्स लाइक गेम्स, आई हैव प्लेड लाइज ऑफ पी और मैंने बहुत ही इन्जॉय किया। हालांकि कुछ बॉसेस को मार नहीं पाया तो गेम को वहीं पे मेरे को ख़त्म करना था। एंड द थिंग इज़ कि वो गेम में ना यूट्यूब वाले मतलब गेम प्ले देख कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव द स्किल, यू डोंट हैव द स्किल Yeah, को। yeah. सो या तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मतलब एक पर्सपेक्टिव है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है आपकी गेम का, जो जहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि कोई डिफिकल्टी नहीं है, वेल एंड गुड। गेम जो डिफिकल्टी सेट करना चाहता है प्लेयर के लिए, गेमर के लिए, क्या गेमर के प्ले स्टाइल के ऊपर गेम अपना डिफिकल्टी को लाएगा? मतलब मैं आपको एग्जांपल से कहता हूँ, अगर गेम समझ रहा है, गेम की एआई समझ रहा है ये जो बंदा खेल रहा है ये कंप्लीटली इज अ नूब गाय, इट डजंट नो, तो हम लोग इसको ना तो बहुत बहुत एनिमी नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे। लेकिन अभी वही पर्टिकुलर गेम वही सेम लेवल पे कोई मतलब ओजी प्लेयर खेले तो शायद 4-5 एनिमी और बढ़ा दे। तो ये मैकेनिज्म क्या आप कहीं पे डालना चाहते हो अपने गेम पे, या तो फिर डाल चुके हो? नहीं, ऐसा कुछ मैकेनिज्म तो हमने सोचा नहीं है अच्छा, बिकॉज आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इवन इन मोस्ट गेम्स इज द रिवॉर्ड फॉर पुटिंग इन द एफर्ट टू अंडरस्टैंड। जो गेम के सिस्टम्स को समझने में वो चैलेंज रहता है, वी कांट पनिश द प्लेयर फॉर बीइंग गुड। You can only punish the player and try to teach them better. So it's also part of the game developer's responsibility. If someone is being really difficult at your game, that means maybe you have not explained the systems clearly. Maybe you ओके, have not given them. See, some of the things is a player expression भी एक चीज होता है that the player has to have multiple ways. It should not be like ऐसे boss के like ऐसे 100 attacks है और उसमें सिर्फ एक है जो you have to like skillfully ऐसे 4 बार प्रेस करना. Those are हाँ, like not the things that उतना we मतलब believe. कन्वेंशनल लीनियर नहीं है। Yes, yes. And हमें क्या है that we want people to experiment. We want them to try to ग्रेट, find their play style. जो हमारे ग्रेट, actually the thing the reason why the game has taken us so long is we have built very deep combat systems. तो हमारे में जो we have 3 weapon classes and each weapon class में 3 एक unique weapons रहते हैं. And each weapon has its own playstyle. And when I say playstyle, I don't mean surface level cosmetic कि इसके दो अटैक का कॉम्बो है, उसका 4 अटैक का कॉम्बो है. No, there are other things that fundamentally change between the weapons. So ऐसा एक एक लाइफ स्टील वेपन रहेगा जिसमें if you understand how it works, you can build the combo and even without realizing you would have finished the enemy.
but that Okay. style may not work for a different player, but we Yeah. have 9 weapons that the player can choose from. And uske Yeah. alawa we have a soul crest system which is the magical abilities. So you have Okay. like each soul crest has 4 abilities. तो ऐसे 5 to 6 soul crests रहेंगे. So combining these two things, you can overcome all the enemies and bosses in our game. And we want people to be as smart as possible, combine things that even we can't foresee, so that they can Okay. feel कि हाँ ये combination मैंने खुद discover करके ये मजे ले रहा हूँ. Like sometimes you get into a game, you master the systems. ऐसे बॉस के आगे जाके you're like मैं एक क्लिक करूंगा तो बॉस मर जाएगा. That is because your understanding of the game is that high. वो min maxing करते हैं ना, where you have understood every system of the game so well कि you feel like you're on another level. You're like no one can like गॉड compete मोड, आई with अंडरस्टैंड me. सर। आप एक सच सच Exactly. बताइए, आप मतलब दिल पे हाथ रख के, आप नहीं हाँ. चाहते हो कि प्लेयर बार बार मरे एज ए डेवलपर? Actually, गेम प्ले तो actually, गेम प्ले टाइम बढ़ जाएगी, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को और रिकमेंड करेगा, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ तू खेल के देख। आप नहीं चाहते हो प्लेयर मरे? सच बताइए। Uh, actually, not so much because I think it's very easy to build a difficult game. Like if you don't explain the rules, the player can keep dying and all of that. But eventually, they're not having fun. Ultimately, we want the player to have fun, right? ओके। Even when the player dies, like there are so many games in which I'm playing and then I keep dying to the same boss and I'm just getting frustrated. But it's part of the loop. The minute you understand how the designers या like thought about it कि हाँ ये अटैक के बाद में ये करोगे तो in a very पैटर्न smart way you पैटर्न can फॉलो overcome. पैटर्न फॉलो Yes. करनी पड़ती है। अब जब हाँ, 10 बार हारोगे तो वो हो जाएगा। तब ना वो जिगसॉ माइंड में like ऐसे suddenly it will all make sense and then you just do it and then you feel that rush, you feel that high कि shit I did something so cool. And I think in games that is the magic moment that we're all trying. Even if people die, it's okay, but if they enjoy it and then they're able to learn something from it, I think that is the ultimate goal for like any game developer. So it's always fun to see या people die in like या ऑफ unexpected कोर्स, एज ways, ए डेवलपर but we इट्स don't want ऑलवेज them फन। to. एटलीस्ट प्रिलिमिनरी Yeah, फन इज देयर। दो चीज मैं आपके yeah, गेम गेम के बारे में जानूंगा, उसके बाद sure, हम लोग मूव ऑन करेंगे इस टॉपिक से। चीज sure, पहला ये है कि आप सिर्फ मुझे ये बताइए, ज्यादा कुछ मत रिवील कीजिएगा, मैं चाहता हूं कि लोग इसको खेले। कि sure. यहाँ पे जैसे कि राइज ऑफ पी में एक मतलब जगह होता था जहाँ पे जाके हम गेम को सेव कर सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पे भी जस्ट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ सोर्स लाइक, तो यहाँ पे भी चेक पॉइंट्स तो बहुत कम ही होगा। Yeah, so actually Metroidvania में भी you have the concept of save points. Exactly, like जैसे वो Dark Souls में भी वो क्या बोलते हैं bonfires है, Elden Ring में हाँ। वो एक और चीज है. So you will have save points quite a lot. हमें क्या है, we don't want it to keep it very rare because nowadays the good practice is to keep allowing the player to get, because it can get very frustrating if you die somewhere and then you have to go back 45 minutes. It's not very fun. But instead, if you can have checkpoints frequently, but then you have a fun loop, like जो वो 10 मिनट में है, it's like giving a player a lot of fun and you can still make it difficult. It doesn't have to be easy what they do. So हमारे इसमें it will be quite frequent. ऑल्सो एक छोटा सा चीज़ जानना चाहूँगा, जब भी प्लेयर मरते हैं, व्हेन प्लेयर डाई, क्या लिखा हुआ आता है स्क्रीन के ऊपर? क्या मतलब क्या लिखा हुआ क्या आता है वो बताइए। तो हमारे स्क्रीन में अभी पेरिस्ट पेरिस्ट लिखा होता है। पेरिस्ट लिखा यू आर होता है पेरिस्ट, हमारे. जैसे GTA या में लिखा होता है यू आर वेस्टेड। तो या मैंने या देखा या है, एक चीज़ मैंने नोटिस किया, आप बीइंग अ डेवलपर सिर्फ ये बताइए कि ये इतने मतलब ये सही है क्या नहीं। एक तो मैंने देखा है कि गेम ओवर जो होता है ये पहले के दौर पे बहुत हुआ करता था, अभी के टाइप पे यू डाइड लिखा हुआ होता है। या तो यू डाइड क्या गेम ओवर से अच्छा काम करता है अगर थॉटफुली देखे तो प्लेयर के लिए? Actually, I don't know. I think most of the time, anytime any of these screens come up, they're just frustrating for the player. तो player को तो गुस्सा आता ही आता है. But अगर हाँ। as long as the player realizes कि खुद की गलती है, then I think you're just like double determined to get past. But anytime the player feels कि game की कोई गलती से मैं मरा, तो तब तो बहुत गुस्सा आता है, वो भी like बुरा वाला.
तो definitely it depends what you perceive, what the player feels. So that's why tight controls, clear telegraphing, very clear information about how things are happening. That is very important. You should not have latency. You should not have any bugs for the player. इंडियन सिचुएशन एंड डेवलपर का जो अभी चल रहा है मार्केट, उसके बारे में थोड़ा कड़वे शब्द पे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, लेकिन इससे पहले थोड़ा दो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ. मैं पूछा था कि गेम डिज़ाइन के बारे में और गेम आर्ट के बारे में अगर कोई फ़र्क है, ऑफ कोर्स है, तो वो ज़रा व्यूअर्स को समझा दीजिएगा उनके लैंग्वेज पे थोड़ा सा आसान करके, ताकि लोगों को वैसे गेम मैकेनिक्स बोलते रहते हैं, लेकिन गेम मैकेनिक्स के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्वांटिटी होते हैं, स्पेशल होते हैं, एक्शन वगैरह होते हैं, तो वो ज़रा लोगों को समझा दीजिए कि ये एक्चुअली क्या है, लाइक व्हाट इज़ गेम डिज़ाइन एंड गेम आर्ट. Sure. So I think the biggest difference is game design is so important. Ki if the game design is good, everything else can be bad, but the game will still be popular. The game will still be fun. So game design is all the things you experience, not always the things that you see, but the things that you feel, the things you have to overcome. So it depends on how, like all the, like, okay, let's say you have 10 enemies in a game. Who designs, who decides what all abilities each enemy will have? ऐसा नहीं कि मैं पावरफुल एनिमी को पहले डाल दूं और फिर यूजलेस एनिमी. देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रक्चर टू इट. देयर इज अ लॉट ऑफ सिस्टमैटिकली रहना, क्या क्या मैकेनिक्स रहते हैं, हाउ डू द मैकेनिक्स वर्क विद ईच अदर, हाउ कैन द प्लेयर फील लाइक दे आर एक्सप्रेसिंग. ऐसे कभी ऐसे आप नोटिस करोगे तो इन मेनी ऑफ द गेम्स बॉस फाइट में थोड़ा ऐसा एक कर्व रहता है इंटेंसिटी का. बहुत हाई इंटेंसिटी है तो यू विल फील एग्जॉस्टेड, बट ऐसा अच्छा सा कर्व रहे एंड देन पीक में यू आर ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक मैं ऑलमोस्ट मार दिया, तब एक्चुअली इजी हो जाता है. एंड देन यू फाइनली दैट लास्ट 10% व्हेन यू आर लाइक शूटिंग द बॉस, दैट्स व्हेन यू आर लाइक हाँ मैंने ये डिफीट कर दिया. ऑल द साइंस, the art, all of it is what goes into the game design part, and that's what makes you feel really good. You can have the world's best art, but if the game design is bad, it can't save the game. So that is what role game design plays. That is where the whole thing begins, and that is what tells everybody else, all the other teams, how to work together towards that vision. Because games itself are such an abstract work of art. Once the game is made, you can look back and say, हाँ ये है. But actually, when it's just in somebody's head कि ऐसा game है, they haven't thought of everything. You need a team of 10-15 people to build that thing in your head, and then it has to become the same thing in 15 people's head. Yes. Each person is having, because you're building something that one person cannot build. Well, so that's why game design के ऊपर सर like writing का कुछ effect आता है, जिस तरीके से लिखा जाता है गेम को. लिखा जाता है मतलब लाइक यू मीन मतलब राइटिंग, मतलब जो एक लिखा जाता है ना कि गेम को मतलब कैसे शुरुआत करेंगे, उसका रोड मैप क्या होगा, गेम का किस तरीके से जाएगा, कैरेक्टर कैसे बिल्डअप होगा, तो ये लिखावट का भी उतना ही फर्क पड़ता है गेम डिजाइन में. बहुत एवरी एस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट. लेट्स से कि यू मेक एवरीथिंग अमेजिंग, गेम डिजाइन, गेम आर्ट, प्रोग्रामिंग. लेट्स से साउंड को इग्नोर कर दिया, ओह गॉड, और फिर तो गया. या फिर VFX बहुत गंदे दिख रहे हैं, या फिर परफॉर्मेंस, और थिंक एवरीथिंग इज गुड विद द गेम बट ऑप्टिमाइज नहीं है. ऐसे सोच लो कि आपने स्टार्ट कर दिया एंड क्रैश हो रहा है, सेव किया तो क्रैश हो रहा है. तो एवरी एस्पेक्ट अबाउट इट इज सुपर इम्पोर्टेंट, एंड यू शुड लर्न. द गुड थिंग इज बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है ऑनलाइन सीखने के, एंड try to learn little bit of everything, but specialize in a couple of things, and then find other people who have other interests to you, so that you can try to build something amazing together. Like work with people who think opposite to you, then you'll build something really cool. If you build something with someone who agrees with everything you're thinking, you won't really think of building something that amazing. Great. So 2024 में अभी आके सर आपको कैसा लग रहा है कि क्या इंडिया पे कंपटीशन है?
डेवलपर के अगर मामले में, क्योंकि अभी तो मैं जितना दूर देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे गेम कंपनीज हैं, शायद बहुत सारे ऐसे भी है जिसको शायद मैं अभी तक रिसर्च नहीं कर पाया हूँ। तो क्या कोई इंडिया के मतलब इंडिया के यहाँ पे कोई कंपटीशन है व्हेन इट कम्स टू गेम डेवलपर्स? I don't think there is any competition in that way. I think if you come to IGDC or any other gaming event, I think game developers are the kindest people to each other, and I think या definitely India may be. Everyone is very supportive, every like kind. And we want to see each other grow because या if one studio does really well, hope that will create some opportunities for all the other studios here. I think like the people who play our games can be they're not always kind, I suppose. So at least game developers we understand each other's struggle and all of that, and we want to support each other. I think the only way we can really reach that international stage is by helping each other, and I think that's what the Indian industry is also trying to do. सर आपने So रीचिंग की everyone is बात की, kind. आपने सर रीचिंग की बात की, तो प्रशांत जी आप ये कहिए कि रीच गेम की रीच जब बारी आती है, इंडियन क्रिएटर्स कैन बी ए ह्यूज फैक्टर जिस तरीके से उनके सब्सक्राइबर्स है। लेकिन अगर मैं कोर पे जाऊँ तो देखूंगा एक या दो या तीन ही गेम खेल रहा है, वो ट्राई आउट नहीं कर रहे, जो कि हम लोगों की पहली बातचीत हुई थी। एज अ गेमर या तो फिर डेवलपर आपको हर जॉनरा को ट्राई आउट करनी चाहिए, ये चीज़ यूट्यूब वाले क्रिएटर नहीं कर रहे। तो क्या इससे कोई ग्रोथ रुक सकता है? लाइक इंडिया के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल की नहीं, लाइक इंडिया में ओनली। I think वर्ल्ड वाइड गेमिंग ऑलरेडी इतना बड़ा फिनोमिनन है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है. इट इज बिगर देन मूवीज एंड म्यूजिक पुट टुगेदर, एंड इट इज सेट टू कीप ग्रोइंग. इट्स गोइंग टू कीप ग्रोइंग एवरी ईयर एंड ईयर. So I think as far as the gaming creators go, I don't expect anything to stop because ओके। the world is changing. Every day you have new games. The audience preference is changing. They want to play more international games. So no matter what anything does, I think that is not possible to change. What we can hope for is that the Indian audience starts playing a lot of different types of games. They be very experimental. They try out new experiences. I think that is most important so that they can enjoy what we enjoy. I think that's the only thing. Try out more games, and games can really surprise you. विंड्स ऑफ आर्काना रूनेशन, Yeah. ये एक ग्लोबली एक्लेम्ड नाम हो सकता है क्योंकि सब इसको जानता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज पे है। अब ऐसे में कोई अगर गेम जो बन रहा है हिंदी लैंग्वेज पे, इफ़ आई टेक सम नेम लाइक मुंबई गलीज, गलियारे, राइट, तो ये क्या कोई फैक्टर होता है ग्लोबली? क्या ये गेम सप्रेस हो जाएगा इस नाम के वजह से अगर वो इंडियन नाम दे रहा है? I don't think language can, I don't think language plays that much of a limiting factor. If the game is really good, I think it will do well regardless. अभी जो प्रिंस ऑफ पर्शिया के बारे में आप बात कर रहे थे, Lost it is in Crown। English, but they also did a really good job, and they have a Farsi voiceover as well. वेल So if you really want to experience it in the language that perhaps the world is set in, you can listen to it, and that is an option. You we build in English so that it has a mass appeal, but I don't think it needs to necessarily stick to any certain values. I think more culturally grounded or relatable the world, the story, the characters is. I think language is not a barrier anymore. I think like half the time इंडिया में लोग कोरियन शोज देख रहे हैं, या फिर लाइक सॉन्ग सुन रहे हैं लाइक जापानीज. I think nowadays it doesn't matter. Like we watch content of all other languages, right? It doesn't stop us, like whether it be Malayalam or Telugu or Hindi, Kannada. It doesn't matter anymore. So I don't think the language like can stop a game from being successful. If it's a good game, it will be successful. And why like people release games in a lot of languages? So ultimately, we want our game to be localized in multiple languages as well. ओके, कितने So लैंग्वेज आ रहे we, हैं फिर आपके गेम में? so voiceover, we are only thinking English right now. ओके, But the menus, the readable, like all the reading stuff, we want to, if the game does well, we want to at least be supporting 13 to 14 languages.
Okay. Sir, I would suggest, I don't know, it is up to you guys, it is up to your team. I would suggest, मेरे को हमेशा से ही लगता था कि हम लोग ना बहुत सारे फारसी वारसी भाषा में आप बोल रहे हो, हिंदी तक आ रहा है लेकिन हिंदी नहीं आ रहा है। भाई हिंदी में भी कोई अगर रिलीज़ कर दे वॉइस ओवर आर्टिस्ट से, ऐसा भी कुछ खर्चा नहीं होता है, मतलब मैं जितना जानता हूँ, ठीक है, आप किसी से भी करवा सकते हो, हिंदी बोलना है तो दैट इज़ द थिंग। अगर आप ये करोगे ना, मेरे हिसाब से ये एक अमेजिंग यूएसपी के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि लोगों की चाहत है, दैट इज़ अ लेटेंट नीड, राइट। जैसे कि वॉकमैन आया था ना, तो लोगों को चाहिए था कि मैं रास्ते पे जाते हुए गाना सुनूं, लेकिन टेप Right. रिकॉर्डर का ज़माने पे वो नहीं होता था। लेकिन वॉकमैन Right. आया ना, लेटेंट नीड था, क्लिक कर गया, वॉकमैन जीत गया। और उसी Right. सिस्टम को अभी फ़ोन लेकर फ़ोन जीत रहा है। तो सेम चीज़ है ना सर, सेम, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी को लाओ यहाँ पे, हिंदी को लाओ, तो आप इंडिया पे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक ग्रोथ हो सकता है। बहुत लोग शायद इसी रीजन के वजह से गेम को खरीदे, क्योंकि मैं जितना तक जानता हूँ कि इस गेम का प्राइस तो ट्रिपल है, जैसा कभी नहीं होगा। तो इंडियन ऑडियंस आराम से इसको अफोर्डेबल कर सकते हैं। इस चीज़ का यूएसपी रहेगा ना, हिंदी लिखा हुआ रहेगा ना, इस चीज़ को आप कोप अप करोगे एटलीस्ट इन इंडियन जो आपका मार्केटिंग है, इंडियन मार्केटिंग सेगमेंट पे अगर आप हिंदी को एक्सपोज करोगे कि हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है, शायद ये काम कर जाए मेरे हिसाब से। बाकी No, आपके definitely, like we will consider या all the बाकी तो things आपके if there's टीम even से enough अगर demand. बात हुआ, आई विल लेट देम नो। तो प्रशांत जी, ये आप कहिए कि अभी तक का गेम टाउट गॉसिप पे आपका जो भी कन्वर्सेशन हुआ मेरे साथ, आपने इंजॉय की, आपको अच्छा लगा? Definitely, definitely. I think थोड़ा बहुत हमने बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए. So हाँ जी, starting from how I started and then या why I enjoy games and what type of games we'd love to make at our studio. And of course we definitely hope कि और सारे लोग games खेले इंडिया में and वो भी अलग-अलग तरीके के. So हाँ हाँ। that would be the most interesting. एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि मैं मतलब वी रैप अप द इंटरव्यू, द थिंग इज़ कि इंडिया का टैग अगर ना रहा आपके गेम में, तो ऐसे में क्या इंडियन ऑडियंस उसको खरीदेगी जस्ट बिकॉज फॉर योर गेम मैकेनिज्म, जस्ट बिकॉज फॉर योर गेम लाइक प्रॉस्पेरिटी, क्या खरीदेगी? So ideally हमारा लॉजिक वही था कि make the game as good as any game out there. Because any game abroad also it ends up never mattering where the game is made from. If the game is good, it'll sell, and it would be the biggest advantage for us. See, when it comes to local language voiceovers and all of that, if there is enough request, people are like, look, we really want to enjoy this game. We love this game. We would love to see it in this language. If enough people ask us, we'll definitely want to do it. There is nothing like ऐसा कुछ भी reason नहीं है जो हमें ना नहीं ना। करना है. We want our game to be accessible by everybody everywhere. ओके, So that is our biggest criteria. अगर लोगों को पसंद आए और वो और भी ऐसे फीचर वो सब देखना चाहेंगे तो definitely we'd love to make it. कैन यू गिव मी एनी टेंटेटिव डेट्स ऑफ योर डेमो लाइक अपकमिंग? Yeah, I think by April 10th, I think we will have the demo on Steam and ग्रेट। game release hoga next year, probably first quarter May, and we'll ओके be targeting a PC and console launch. ओके So ग्रेट, that's यही what we're पूछना था looking कि at. कौन से हार्डवेयर पे आप करना चाहते हो, लाइक पीसी एंड कंसोल, यानी कि नॉट एक्सबॉक्स, राइट? ओनली इन प्ले स्टेशन। So no, we want, again, we don't want the consoles to stop people from ओके playing it. We want it to be on all consoles. तो PC, Xbox, PlayStation सब में आएगा. उसके बाद Switch में आएगा. फिर मोबाइल में भी आएगा. तो मोबाइल में भी आएगा? yes, ओके yes. Initially ये गेम एक्चुअली मोबाइल गेम था and that ओके we changed into a PC game. तो काफी सारा चेंज हुआ है. But the goal was always to release a game for mobile audience because we felt platform deserves good story games as well. अगर ये 2025 को इनिशियल रिलीज हो रहा है पीसी पे, मैं अगर मान के चलता हूँ, तो 1-2 साल और भी लग जाएंगे बाकी प्लेटफॉर्म में पोर्ट करते हुए फिर? I would say 12 months. हम ऐसे प्लान करके ऑलरेडी हम टेस्ट कर रहे हैं सब कंसोल पे. तो दैट्स समथिंग वी आर लाइक ऑलवेज टेस्टिंग. वो तो हम करते रहते हैं हाँ यहाँ जी, वहाँ. तो हाँ जी। सो इट्स बीन अ प्रिविलेज टू टॉक टू यू प्रशांत जी।
और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वीडियो गेम्स की तरफ से आप हमसे बात की और गेम टाउट गॉसिप में इन्जॉय भी किए और हमें काफ़ी सारा नॉलेज भी प्रदान किया। और हैविंग सेड दैट, मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं आपके या आपके टीम के साथ जुड़ूँ, कुछ और भी पॉडकास्ट लाऊँ, कुछ और नए टॉपिक्स के ऊपर। तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर एंड गिव अस सम अमेजिंग मोमेंट्स। मेरा नाम था सिद्धार्थ। गेम टाउट गॉसिप में जुड़े रहने के लिए आपका सभी बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद। हैप्पी गेमिंग दोस्तों।